Prime Minister Narendra Modi will pay homage to the Polish-Indian legacy at the Good Maharaja Square in the Polish capital of Warsaw during his visit to the country on August 21st and 22nd. The Good Maharaja Square is located in the heart of Warsaw, the Polish capital. The square honors Jam Shri Digvijay Singh Ji, Ranjit Singh Ji Jadeja and Maharaja Jam Sahib of Navanagar, Gujarat. In 1942, the Maharaja had provided refuge to about 1,000 Polish children from war-torn occupied Poland and Soviet camps following the occupation of Poland by Nazi Germany and Soviet Russia. पिछले 40 साल से कोई प्राइम मिनिस्टर आया नहीं है पोलैंड में और मोदी जी के आने की जब खबर हमें मिली हम बहुत उत्साहित थे और खुश भी थे। पीएम मोदी के आने से ऑलरेडी इंडिया टू पोलैंड $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है जो कि आज ही ब्रीफिंग में हमें सुनने मिला है और पोलैंड टू इंडिया से 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है जाकि दोनों देश में बिजनेस रिलेशंस जो मेंटेन हो रहे हैं तो हम ये चाह रहे हैं कि और बढ़े और डेवलपमेंट हो दोनों देशों के रिलेशंस में। आई थिंक अगर पीएम मोदी यहाँ आते हैं तो एक एक्सपोजर मिलेगा टू दी लोकल कंपनीज टू हायर मोर फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ जैसे आपने पहले भी मेंशन किया था कि यहाँ पे लेबर शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा है और इंडिया में जो है ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट की भी काफ़ी कमी है। तो अगर उस गैप को ब्रिज करने में अगर मोदी जी कुछ हेल्प कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहाँ आकर तो काफ़ी अच्छा होगा। Prime Minister Modi will also honor the memorial for the Battle of Monte Cassino, where Indian and Polish soldiers played a key role in the 1944 battles of Tobruk and Monte Cassino during World War II. The Prime Minister will pay homage to the Indian soldiers who laid their lives down alongside their European counterparts during the Second World War at the Tomb of Unknown Soldiers in the Polish capital. India's ambassador to Poland said that Prime Minister Narendra Modi's visit to the country will give a greater knowledge and understanding of economic and other possibilities between the two nations. I do anticipate that Prime Minister's visit here will give a greater knowledge of each other's possibilities, a greater understanding on both sides of the possibilities of the market, the possibilities that the bilateral trade relationship, the economic relationship in general possesses, and I believe that we can turn this moment to good use, even in the bilateral economic sphere. As per officials, Modi will also hold talks with Polish Prime Minister Donald Tusk, meet Indian diaspora and Polish business leaders.